गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन. ओके, आज हम साइंस में कंटिन्यूस में पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम. वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. एक्टिविटी 5.1 आपको बनानी है लिस्ट कि नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें होती है और मैन मेड कौन कौन सी होती है. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. Can we use all our natural resources forever? Can air, water, and soil be exuded by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in natural resources can be broadly classified into two kinds. इनएग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मानव ने निर्मित नहीं की है, वो जो हमें नेचुरल मिली है और जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है, उसको जो है इनएग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन unlimited quantity in nature and are not likely to be exuded by human activities. Example are sunlight and air. Sunlight और air जो है वो मानव निर्मित नहीं है. अब आ रही है बारी exudable natural resources, मानव निर्मित प्राकृतिक साधन जो मानव निर्मित कर सकता है या उन्होंने किया है. The amount of these resources is nature is limited. They can be exuded by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, mineral, coal, petroleum, natural gases, etc. ओके, अब एक्टिविटी 5.2 में बता रहे हैं कि भाई आपको जो है वो एक कंटेनर लेना है, उसको पॉपकॉर्न, पीनट या रोस्टेड ग्राम्स या टॉफी से बना. डिवाइडेड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स of 7 each. Further divided each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. These subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generation have larger number of consumer. तो आप ये एक तरह का प्रैक्टिकल करके देख सकते हो. उसके अंदर पता पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है और कौन सी चीज़ बढ़ती जा रही है. ठीक है. नाउ 5.1 कोल. यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट. इज़ हार्ड एज स्टोन, इज़ ब्लैक इन कलर. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. Okay, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Assumes that the eatable in the container represent the total availability of an executable natural resource like coal, petroleum or natural gases. Story of coal. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposit, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग आपको बता देती हूँ. क्या होता था कि 300 अरब साल पहले धरती पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या था, जंगल थे. ठीक है. अब जैसे जैसे नेचुरल प्रोसेस होती गई, बाढ़ आई या जंगल में आग लगी या जैसे भी जो भी हुआ था, तो सारे के सारे जंगल जो है वो अंदर मिट्टी के नीचे दब गए. और जब वो मिट्टी के नीचे दब गए तो उनके ऊपर जो है कॉम्प्रेस्ड हुआ यानी भार बढ़ा और वो टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि वो डीपर एंड डीपर नीचे चले गए. अंडर हाई प्रेशर and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. जो dead plants थे और जो जंगल थे वो उनकी जो लकड़ियाँ थी वो किस में बदल गई, कोयले में. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is shown
फिगर पॉइंट 2। 5.2 में देखिए कोल माइन, यहाँ पर देखो कोयले की खदान है और यहाँ पर कोयले की खुदाई हो रही है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. Coke. It is a tough, porous, and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and the एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक जो है वो बहुत टफ होता है, टो जो है उसका वो बहुत ब्लैक कलर का और बहुत हार्ड होता है और वो अधिकतर जो है वो मेटल्स के लिए और स्टील के लिए काम में आता है। नाउ कोलतार सबको पता है डांबर को बोलते हैं जो जिससे सड़क बनती है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 substances produced obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. Coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal and get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal process plants. Now, petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as a motorcycle, scooters and cars. Heavy motor vehicles like truck and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resources called petroleum. The word petroleum is derived from petra and oleum as it is mined from between the rocks under earth as shown. Do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gases. आप 5.4 के फिगर में ये आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर ये सब चीज़ें नीचे दबती चली जाती है और ऐसा हो जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑड्योर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल, परफ्यूम, वैक्स, etc. The process of various constituent of petroleum and their use are given. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in manufacturing of detergents, fibers, polyester, nylon, arsenic, etc. Polythene and other man-made plastic, hydrogen gas obtained from natural gas. It's used in the production of fertilizers, means urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. Next, separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. ये देख लीजिए 5.5 में आपने बहुत जगह पे ऐसी रिफाइनरी देख रखी होगी। नेचुरल गैस is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting. It is a cleaner fuel. It is the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. Natural gases is also used as a starting material for
the manufacturing of a number of chemical and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. Okay, now some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustable like fossil fuel, forest, minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organism millions of years to get converted into the fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, a smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association PCRA advised people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are: drive at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Ensure correct tire pressures. Ensure regular maintenance of the व्हीकल. देखिए सब पूरे ओवरऑल चैप्टर का मीनिंग क्या कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो स्वतः ही निर्मित होते हैं. तो उसमें से जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उन्हें हमें जो है वो बचाना है और उन्हें सेव करना है. ठीक है. और जिस तरीके से जो है हम जब भी, और इसमें मेन आता है पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम को कंजर्व करने में बहुत टाइम लगता है. ओके. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. बाय.